Hello friends, the last time we have derived the equation for the prism like I plus E is equal to A plus delta. Related with the prism, we can say I is the angle of incident, E is the angle of emergence, A is the prism angle and delta is the deviation angle. Then we got the relation related with prism. Now today we are going to discuss one more thing about the prism as the formula for the refractive index of the prism. At that time, just revise the earlier diagram. So this is our prism. We can say prism ABC and one monochromatic light which is incident on the one surface by making angle I, and here the ray enter from rarer to denser, that's why it is deviated towards to the normal. We can say this angle is R1. Now for this surface, this one is a normal and this angle is R2. Now here ray enter from denser to rarer, bends away from the normal. Then this is called angle of emergence. And when we extend both the rays, then this angle is called total deviation angle. Then this is the relation between angle of incident, angle of emergence, the prism angle and the deviation angle. Now from this equation, if we say deviation angle depends on which quantity, then the prism angle is fixed. Whatever the prism is there, the prism angle is fixed. And if we change the angle of incident, then angle of emergence will be changed. That's why we can say the deviation angle is depends on angle of incident. That means the total responsibility on angle of incident for the change in deviation. That means if we choose the different values of angle of incident, then we will get the different values of deviation angle. And if we do the practical related with that, and when we draw the graph of deviation angle versus angle of incident, we can get ग्राफ लाइक दिस. इसका एक्सपेरिमेंट भी है, सिलेबस में ही है कि व्हेन वी चूज द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, we can get different value of deviation angle. And if you plot the graph of deviation angle versus angle of incident, you can get this type of graph. It means for smaller value of angle of incident, the deviation angle is large. As you increase that angle of incident, deviation angle decreases. And if you further increasing the angle of incident, there is again increasing in deviation angle. That means for one particular value of angle of incident, the deviation angle is minimum. That minimum deviation angle we can denote as a delta m. Delta m is called minimum deviation angle. For one particular value of angle of incident, the deviation angle becomes minimum. That is called minimum deviation angle, delta m. And practically, whenever you are finding the minimum deviation angle, at that time angle of incident and angle of emergence becomes same. That means ये जो दो एंगल है वो सेम हो जाएंगे. And whenever the angle of incident, angle of emergence becomes equal, at that time the refracted ray which is inside of the prism remains parallel to the base. देखो ये एक याद रखो कि whenever deviation angle minimum,
for this angle of incident and angle of emergent are same, and whenever both are same, at that time the refracted ray, otherwise the ray which is inside of the prism remains parallel to the base. अब यहाँ से whenever I is equal to E at that time, from this equation I is equal to A plus delta, we can say from I plus E is equal to A plus delta. Whenever we use I is equal to E, at that time we have to use delta as a delta M. That means when I is equal to E, at that time the deviation angle is minimum. That's why we can say 2I is equal to A plus delta M. That's why the angle of incident is equal to A plus delta M by 2. Say as equation number 1. Angle of incident जो है वो यहाँ पर है. अब in the case of refraction, whenever we use the Snell's law, मतलब for the surface AB, just use Snell's law, मतलब apply Snell's law at surface AB. So we can say eta 1 sin I is equal to eta 2 sin R1, and apply Snell's law at surface AC. यहाँ पर Snell's law apply करें. Then the medium is same. We can say eta 1 sin E is equal to eta 2 sin R2. But when we say I is equal to E, at that time eta 1 sin I is equal to eta 2 sin R2. Then from equation 2 and 3, we can say left hand side are same. अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को कंपेयर करो, इसमें eta 2 कैंसल. दैट्स व्हाई वी कैन से sin R1 is equal to sin R2. दैट मीन्स sin की वैल्यू सेम है तो बोल सकते हैं कि R1 is equal to R2. ये जो दोनों अंदर एंगल है R1 R2 वो दोनों सेम होंगे, और इसीलिए जो रे है इट रिमेन्स पैरेलल टू द बेस. और इसको अगर हम ऐसा ही बोल दें ओनली R, जस्ट कंसिडर एज ए R, देन वी नो दैट कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, जो इक्वेशन हमने अर्लियर डिराइव की है. Okay, for any type of prism, R1 plus R2 is equal to the prism angle. That's why we can say 2R is equal to A. R1, R2 is a R. Then 2R is equal to A. R is equal to A by 2. And which is equal to R1 and R2. R1 की value भी A by 2. R2 also A by 2. Then from equation number 2, what we can say, eta 1 sin I is A plus delta M by 2. A plus delta M by 2 is equal to eta 2 sin R1. R1 और R2 is a by 2. That's why if we want to write eta 2 upon eta 1, then eta 2 upon eta 1 is equal to, अब eta 2 upon eta 1 तो ये आएगा डिनोमिनेटर में sin
A plus delta m by 2 upon sine A by 2. This is the equation for the refractive index of the prism. Then eta 2 is the refractive index of the prism. Eta 1 is the refractive index in which the lens is kept. जो सराउंडिंग अगर एयर है तो सिंपली बोल सकते हैं कि दिस इज 1, then eta 2 is equal to sin A plus delta m by 2 upon sin A by 2. Okay, for air eta 1 is a 1, then simply eta 2 को eta बोल सकते हैं हम, then sin A plus delta m by 2 upon sin A by 2. Always remember this equation for the refractive index of the prism, कि जो always न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो मीडियम कि जिसमें हमने लेंस प्रिज्म रखा हुआ है. तो eta 1 is a refractive index in which prism is kept. A prism angle, delta m is the minimum deviation angle. तब यहाँ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो डेविएशन एंगल मिल सकता है. डेविएशन एंगल ऑल्सो गिवन, देन वी कैन गेट प्रिज्म एंगल ऑल्सो. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है. अब इसी इक्वेशन से अगर हम आगे चले, देन डेल्टा एम इज द मिनिमम डेविएशन एंगल. इफ वी कंसीडर द प्रिज्म एंगल इज ऑल्सो स्मॉल, मतलब फॉर स्मॉल प्रिज्म एंगल, तो देखो प्रिज्म एंगल स्मॉल है, ये तो स्मॉल है ही, प्लस डिवाइडेड बाय 2 करोगे इट इज बिकम्स वेरी स्मॉल. एट दैट टाइम वी कैन से साइन A plus delta m by 2 becomes very small. At that time we can say sin theta approximate theta, then it is A plus delta m by 2. And prism angle small है तो A by 2 भी small होगा, that's why approximate A by 2. Then what we can say about the equation of refractive index of the prism with respect to air? A plus delta m by 2 upon A by 2. 2 will be cancelled. जो A है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब eta A is equal to A plus delta m. Then what we can say about the minimum deviation angle? यहाँ पर आएगा तो माइनस और A कॉमन ले लो, that is ईटा माइनस 1. अब अगर कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ पर सिर्फ नीचे होगा ईटा, ये ऊपर ईटा 2 नीचे ईटा 1, तब ईटा 2 बाई ईटा 1 भी बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर ओनली ईटा. देन दिस इज द मिनिमम डेविएशन एंगल इन केस ऑफ स्मॉल प्रिज्म एंगल ए. जब भी कोई प्रिज्म एंगल स्मॉल होगा एट दैट टाइम डेविएशन एंगल यहाँ से मिलेगा. अदरवाइज अब ये जो स्मॉल एंगल है वो ऐसा बोल सकते हैं कि लेस देन 10 डिग्री तक, कि प्रिज्म एंगल हमें लेस देन 10 डिग्री तक दिया है. देन फॉर द मिनिमम डेविएशन यू कैन यूज डायरेक्ट दिस इक्वेशन A into eta minus 1. अदरवाइज फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन कि eta 2 upon eta 1 with respect to where is eta sin A plus delta m by 2 upon sin A by 2. Now one more interesting case related with the deviation angle. Here the deviation angle we can say directly proportional to the eta, and we know that eta is equal to C upon V. That's why eta is inversely proportional to the velocity, and we know that velocity is nu lambda. The frequency remains constant whenever ray enter from one medium to another medium. That wavelength changes. V and lambda are directly proportional. That's why we can say it is
1 upon lambda. Then for the deviation angle we can say, for the ray higher wavelength having the lower value of deviation angle, and for the lower value of wavelength having the higher value of deviation angle, क्योंकि ये जो दोनों है वो एज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. नाउ इफ वी रिमेंबर द लेंस मेकर फॉर्मूला, 1 upon f is equal to eta 2 minus eta 1 upon eta 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. Then we can say the frequency is also inversely proportional to the refractive index. That's why refractive index यहाँ पर है. Then it is inversely proportional to the focal length. तब ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस रे की वेवलेंथ हायर है उसकी फोकल लेंथ भी हायर, उसका डेविएशन कम. So this equation is most important. This relation is most important for solving MCQs. Once again, delta m, minimum deviation, is directly proportional to the refractive index. Refractive index inversely proportional to the velocity, which is refractive index inversely proportional to the wavelength, and is inversely proportional to the focal length. तब ये जो दो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई उसका डेविएशन भी हाई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस डेविएशन ऑल्सो लेस. तब कोई भी कलर से रिलेटेड पूछे कि विच कलर हैविंग द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हायर डेविएशन एंगल, या फिर लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर डेविएशन, हायर फोकल लेंथ लोअर फोकल लेंथ, इस रिलेशन से हमें मिलेगा. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन.